Okay, so the solution that we um, received was this one. So what meaning we can assign to this particular solution? So it has the same meaning as before, that this part of the solution is again representing some kind of a traveling wave, representing some kind of a traveling wave in z direction. And again, minus z will mean that there is a wave that is traveling in the positive direction. So I will say traveling wave along positive z. And this part of the solution is also representing a traveling wave along negative z direction. Now, how we can assign this meaning, you can refer to my previous lecture where I have explained in detail how we will say that e power minus z something represent a positive z traveling wave, and how e plus z something represent a wave traveling in the negative z direction. So the same concept is equally applicable over here as well. Now, what is the difference? What is going to be the difference in the wave propagation in this lossy case and the wave propagation in the lossless case that we discussed last time? So you can easily see this, that gamma is a complex number. So if I want to write it in a complete form, so I will say exz is equal to e plus, and I will say e power uh, minus, and gamma is alpha plus j beta into z plus e minus e plus, and again this is alpha plus j beta into z. So this becomes e plus e raised to power minus alpha z, e power minus j beta z, e minus e plus alpha z, e plus j beta z. So now the difference is obvious, that in this case, as wave travels along positive direction, its amplitude is attenuating exponentially. Similarly, the wave that is traveling along negative z direction, as it travels, its amplitude, which is represented by E minus, it is attenuating exponentially E plus alpha. Whereas in the previous case, when we were considering a lossless situation, the wave amplitude was constant. So you can check it out. In the previous case, this factor was not there. This factor was not there. It was zero. So it means as wave travel along positive direction, its amplitude stays the same. It remains E plus. And for traveling wave, which is traveling along negative z direction, its amplitude remains E minus, where E plus and E minus are constants. But now, because wave is traveling in a lossy media, so as it travels, its amplitude, which is E plus, it is going to decrease exponentially because of this factor. And the wave that is traveling in the negative z direction, its amplitude will also decrease exponentially. So you can see the effect of the losses on the wave propagation. This is, as I mentioned, the phasor solution. So we can easily represent the time solution. So
In time domain, we can write down this equation as. So now this unknown Ex is a function of Z as well as function of T. So the positive traveling wave will be represented as E plus e power minus alpha Z cos of omega d minus beta Z. And the second part of the solution is going to be represented as E minus, sorry, e power plus alpha Z cos omega t plus beta. So once we know the phasor solution, then we know that for time harmonic case or for sinusoidal variation, the time solution can be easily recovered by just multiplying the phasor solution with e raised to power j omega t and then taking the real part, and you will get this thing. Now, what is going to be the solution, corresponding solution for magnetic field? So this is the phasor solution of electric field. So what is going to be the solution for magnetic field? So as before, rather than that we make use of wave equation in terms of magnetic field, which is this one. So one possibility is that in order to find out what is going to be H, we can solve this. But that will defeat the purpose of wave equation. We use wave equation to find either E or either H. And once we know E or H, we can make use of Maxwell equations to find out the other parameter. Because in my case, I have find the solution of E. So now I can make use of wave equation. If someone starts solving first H, so he will solve this equation. But then in order to find out electric field, you are not going to use this electric field wave equation. You are going to make use of Maxwell equation. This is what we did last time as well. So in order to find out what is going to be the associated magnetic field with this electric field, I can make use of Maxwell equation. So I will say curls of E. According to Maxwell equation, curl of E must follow this equation. So we are interested in finding out this thing. So I will rearrange this Maxwell equation. So I will say magnetic field must be equal to 1 divided by minus j omega mu and curl of E. So all I need to do is to find out what is curl of E. So as before, we can make use of the mathematical meaning of curl of E. So whenever you want to find out curl of any vector, of course, in our case, the vector that I want to find curl is E. So this is the determinant that you need to expand and find its value. So this vector, in our case, it has only x component. So we only have Ex, which is also dependent only on Z. The y component of E is 0, the Z component of E is 0. This is the mathematical operation that you need to find in order to find out what is going to be curl of E.
So this is something which we did last time as well. So let me go through it quickly. So curl of E, you will find out that you will only get this thing, y, and the only derivative that you need to take is with respect to z. And you can also see another important observation that when you perform curl of E, you only end up with unit vector y. So curl of E is going to give you only y, which means that this vector h, it will only give you y component, which will be function of z, which means that x is 0 and hz is 0. And again, what is the final expression for hy? So ex z is given to you. So what is going to be this thing? You need to take the of this thing, which is e plus e power minus gamma z plus e power plus gamma z. This is the solution. So this is e x z. So in place of ez, and now you need to take the derivative with respect to z. So what you will get? You will get minus gamma e plus e power minus gamma z plus gamma e minus e plus gamma z. So now we know that curl of E, which is going to be equal to this thing. And of course, this whole thing needs to be divided by this thing. What I can do is I can take minus gamma as common from this thing. So I'm going to take minus gamma as common. So what you will get? So this is minus j omega mu. And now what I'm saying is I'm taking minus gamma as common. So I'm taking minus gamma as common. So we will be left uh, inside brackets, we will be left with e plus e power minus gamma z minus e, sorry, e minus e power plus gamma z. So this minus and minus cancels out. So we will be left with gamma divided by j omega mu. And inside brackets, we will be having e plus e power minus gamma z minus so now with the help of Maxwell equation, we have found the corresponding solution of magnetic field. But there is one thing that we need to do, and that is to relate this thing, this gamma divided by j omega mu. This factor is going to be related to parameter that we used before as well, and I call it intrinsic impedance, जो हमने lossless case के लिए भी use किया था, ठीक है? So what I want you to do is कि ये जो numerator में gamma है, इसको आप shift कर दें in the denominator. So यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आपके पास इसके denominator में चला जाएगा. So we will be left with this thing. So 1 over j omega mu sigma, and then ये जो आपको डिनोमिनेटर में j ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय
a symbol eta. So I will say let eta equal to j omega mu divided by gamma. और ये क्या चीज है? It is the intrinsic impedance of the lossy medium. So based on that, हमारे पास final magnetic field equation, magnetic field solution का form क्या आ गया कि h y z को हम लिखेंगे 1/eta इसको हम eta से replace कर दिया, and then within brackets we have e plus e power minus gamma z minus e to power minus e plus gamma z. So this is going to be the phasor solution of magnetic. As before, we have the same situation that electric field is in x direction, magnetic field is in y direction, and wave is propagating in the z direction. Based on that, is called the TEM wave कहते हैं. Now, I just want you to compare this case with lossless case. यहाँ पे एक important point जो we need to remember is कि ये जो ईटा की वैल्यू मेरे पास जो जिसको मैंने इसकी इक्वल लिया है, ये हमारे पास क्या चीज़ है? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, और साथ में मैं इसको कह भी रहा हूँ कि ये लॉसी मीडियम. इफ यू गो बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर, जब हम लॉसलेस केस कर रहे थे, इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड के सोल्यूशन में डिनोमिनेटर में आप चेक कर लें, हमने ईटा को यूज किया था, लेकिन उस केस में ईटा किसके बराबर था? अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट फॉर रिकैप्चरिंग, जब हम लॉसलेस मीडियम की बात कर रहे थे, इस केस में जब ईटा को हमने लिखा था, ईटा को हम इसके इक्वल लिया था कि इट वाज इक्वल टू ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय के. You can check it out, okay, in my last lecture. तो लॉसलेस केस में मैंने कहा था कि ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय के, और मैंने कहा था कि ईटा है, और ईटा क्या चीज है? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस. जब लॉसी मीडियम की तरफ हम चले गए, तो फिर हमारे पास ईटा जो है इसके बराबर. अब ऑफ कोर्स जो लॉसी केस होता है वो जनरल केस होता है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि ईटा की जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है. ईटा की जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है. एंड whenever you say that general expression, it means कि उस जनरल एक्सप्रेशन से फिर आप कोई स्पेसिफिक केस भी निकाल सकते हैं. तो ये जो लॉसलेस केस है ये हमारा स्पेसिफिक केस है. सो लेट्स फाइंड आउट कि ये तो मैंने कह दिया कि ये लॉसलेस सॉरी लॉसी केस के लिए या जनरली इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडिया जो होगा वो इसके बराबर होगा, जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. अब इस जनरल केस से अगर मैं स्पेसिफिक केस निकालना चाहता हूँ विदाउट नोइंग के, लेट्स अज्यूम के वी डोंट नो अबाउट दिस थिंग, लेट्स अज्यूम कि ये रिजल्ट मुझे नहीं पता, एंड फाइंड आउट कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है. सो अगर हमने लॉसलेस केस सॉल्व जो कर चुके हैं, अगर वो हमने उसमें कोई मिस्टेक नहीं की थी, तो उसमें जो रिजल्ट था ये आया था, इससे भी वो रिजल्ट आना चाहिए. सो लेट्स चेक इट आउट. अगर हमारा मीडियम लॉसलेस बन जाए, सो वी नो कि ये जो जो चेंज आएगा वो इसमें आएगा, ठीक है ना, गैमा. ठीक है. सो गैमा जिसको हमने किसके बराबर लिया हुआ है? गैमा जिसका रियल पार्ट अल्फा है, इमेजिनरी पार्ट बीटा है, इसको हमने मैथमेटिकली फाइंड किया हुआ है कि ये इस एक्सप्रेशन से हम निकालते हैं. ओके.
अब अगर मीडियम जो है वो लॉसलेस हो जाए, ठीक है, सो द पॉइंट इज कि ये जो आपके पास इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है ईटा, इसको हम ले रहे हैं जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय गैमा। सो जनरली गैमा जो है इसके बराबर है, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आपने गैमा को रिप्लेस करना है तो गैमा की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, गैमा की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इसका मतलब है कि हमारे पास गैमा की जगह जब आप ये रिप्लेस करेंगे तो ओवरऑल जो ये पैरामीटर है दिस वन, इससे क्या रिजल्ट, इससे जो रिजल्ट आएगा वो जनरली वो क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी, वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट है आपके पास ईटा जो है क्या चीज़ है, इट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉसी मीडिया का जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है वो जनरली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अब हम तो लॉसलेस केस की बात कर रहे हैं, तो लॉसलेस केस में क्या होगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम कहेंगे कि फॉर लॉसलेस मीडिया वी नो कि हमारे पास प्रोपगेशन कांस्टेंट सिंपली रह जाएगा जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट। सो लेट्स फाइंड आउट कि अगर लॉसलेस मीडियम में गैमा जो है इसके बराबर है, ठीक हो गया, विच इज ऑब्वियसली कि हमारे पास क्या है कि इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक हो गया। इसका ईटा पे क्या फर्क पड़ेगा, ईटा की जगह आप क्या लिखेंगे, जे ओमेगा म्यू, और गैमा की जगह हम क्या लिखेंगे, जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट। सो जे जे कैंसिल आउट, और मैं बिफोर आई सिंप्लीफाइड इफ यू रिमेंबर कि ये जो ओमेगा इनटू म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट था, ये एक्चुअली क्या किस चीज के बराबर था, के बराबर। तो क्या जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई ईटा किसके बराबर आ गया, ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय के। और आप चेक करें लॉसलेस केस में ईटा किसके बराबर होता है, ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय के। So from this general expression, which is valid for any lossy media, I can easily derive what is going to be the expression for eta if the medium is lossless. और अगेन हमने इसको कंफर्म कर लिया कि एग्जैक्टली यही रिजल्ट। बट वी ऑल्सो नो कि इसको अगर आप इसको तो मैं के कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि के में ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट भी इन्वॉल्व है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें वी नो कि इससे क्या रिजल्ट आ जाता है, इसके रिजल्ट आ जाता है ओमेगा म्यू अंडर रूट आ जाता है। सो नाउ यू कैन इजिली कंपेयर के लॉसलेस और लॉसी केस को आप किस तरह आपस में रिलेट कर सकते हैं। नाउ वंस वी हैव दिस डिस्टिंक्शन ऑफ कि वेव अगर एक लॉसलेस मीडियम में प्रोपगेट कर रही होगी तो उसका बिहेवियर क्या होगा, और जो कोरिस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इस चीज को हम एक प्रैक्टिकल उसकी तरफ लेके चलते हैं, जिसका ताल्लुक है कि जब भी हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में लॉसी और लॉसेस की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमें पता है कि इसका ताल्लुक कंडक्टिविटी के साथ, ठीक है ना। मीडियम लॉसेस आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द कंडक्टिविटी। तो हमारे पास जो बिहेवियर है, हम कहते हैं कि हमारे पास वेव्स जो हैं वो एक ऐसे मीडियम में अगर ट्रेवल करें जिसको हम कह देते हैं कि वो गुड कंडक्टर है।
सो जब भी कंडक्टर की बात आ गई, इसका मतलब है कि मीडियम कौन सा हो गया, लॉसी हो गया। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में एक टर्म यूज की थी, परफेक्ट कंडक्टर की यूज की थी, और अब हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, गुड कंडक्टर। तो परफेक्ट कंडक्टर के लिए तो हमें पता था, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर को हमने डिफाइन किया था कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। सो गुड कंडक्टर को हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, हाउ टू स्पेसिफाई, किस बेस पे हम कहेंगे कि ये जो कंडक्टर है ये गुड कंडक्टर कैटेगरी में आता है। तो गुड कंडक्टर की जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है जो आप यूज करेंगे कि ये गुड कंडक्टर है या नहीं, वो इस बेस पे करेंगे कि अगर हमारे पास दो तरह की करंट्स हैं, एक रिमेंबर, एक तो कन्वेंशनल करंट है जिसको आप कंडक्शन करंट कहते हैं, विच इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। और एक और करंट हमने इंट्रोड्यूस की थी जो कि जब मैक्सवेल इक्वेशंस को हम रिवाइज कर रहे थे, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। तो दो तरह की करंट्स हैं, ठीक है। सो मैं इसको लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक तरफ है कंडक्शन करंट, और एक करंट है जिसको हमें नाम दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट जिसका ताल्लुक जे के साथ है, और वी नो कि कंडक्शन करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं कि सिग्मा टाइम्स ई। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इफ यू रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज को हम अज्यूम करें कि साइनोसाइडल है, तो रेट ऑफ चेंज की जगह हम लिखेंगे जे ओमेगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम डी कहते हैं, और डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन टाइम्स। सो कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो सिग्मा टाइम ई पे डिपेंड करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ओमेगा एप्सिलॉन टाइम ई पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो जो कॉमन फैक्टर है वो तो ई है, ऑफ कोर्स ई जो है कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इसको रिलेट करूं कि कंडक्शन करंट कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा कि सिग्मा की वैल्यू कितनी, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि ओमेगा टाइम एप्सिलॉन की। गुड कंडक्टर, हम उस कंडक्टर को कहेंगे कि जिसमें कंडक्शन करंट की जो वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड हो वो डिस्प्लेसमेंट करंट से बहुत ज्यादा होना चाहिए। किसी भी मीडियम में अगर कंडक्शन करंट इज वेरी मच ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट करंट, उस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, उस मीडियम को हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड कंडक्टर का मतलब क्या होगा कि कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है इट शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा टाइम एप्सिलॉन। सो जो कंडीशन है आपको पता चल गई है कि गुड कंडक्टर का क्या मतलब है। So in any good conductor, you can make use of this condition कि conductivity is very very much greater than omega time epsilon, जिसका इनडायरेक्टली मतलब क्या होगा कि कंडक्शन करंट जो है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि इस कंडीशन का हमें क्या फायदा मिल सकता है। हमारे पास जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है जो कि किसी भी लॉसी मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, वो आपके पास इस इक्वेशन को अगर हम, या इस प्रोपगेशन कांस्टेंट को अगर हम यूज करें फॉर गुड कंडक्टर,
गुड कंडक्टर का क्या मतलब होगा? सिग्मा इज वेरी मच ग्रेटर देन। इस कंडीशन को अगर हम इस इक्वेशन में यूज करें, यू कैन सी के इस इक्वेशन में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सिग्मा इज डिवाइडेड बाय ओमेगा एप्सिलॉन। तो इफ यू हैव अ केस लाइक दिस कि सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा है ओमेगा एप्सिलॉन से, सिग्मा इज वेरी मच ग्रेटर देन, तो ये जो नंबर होगा, ये जो टर्म होगी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सो डिनोमिनेटर, सॉरी, जो अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या है कि 1 माइनस जे एंड देन दिस थिंग, but because of this term will be very very large. So it means as compared to 1, this term will be very large, so it means we can neglect or we can assume कि ये नंबर बहुत कम है, इसको हम इंक्लूड ही नहीं करते। तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, हम कहेंगे कि प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसके ले लेते हैं। So make sure that over here we have equality sign, but now I'm using approximately equal by neglecting this thing. And we can neglect this thing because we are assuming कि ये हम गुड कंडक्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये कंडीशन वैलिड। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। So this thing is equal to j under the root। अगर आप यहाँ पे देखें ये माइनस जे है, तो उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 ओवर जे अंडर रूट हो जाएगा। सो 1 ओवर जे अंडर रूट है, यहाँ पे जे है तो यहाँ जे अंडर रूट हो गया। ठीक हो गया। तो फिर आपके पास यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा अंडर रूट है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा अंडर रूट भी आपके पास आ जाएगा। देन यू हैव एप्सिलॉन जो है, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज एप्सिलॉन अंडर द रूट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अंडर द रूट कैंसिल आउट हो गया। देन यू हैव सिग्मा अंडर द रूट, तो सिग्मा अंडर द रूट आपके पास रह जाएगा और आपके पास म्यू अंडर द रूट रहेगी। सो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ एंड देन वी कैन टॉक अबाउट कि ये जे अंडर रूट की जगह हम क्या लिखेंगे। सो ओमेगा म्यू सिग्मा अंडर द रूट। Now using your complex number knowledge, this j under root. This j under root is basically 1 plus j divided by 2 under root. So this is the result that I wanted to derive कि अगर हमारे पास एक ऐसा मीडियम हो जो कि जिसको हम गुड कंडक्टर कहेंगे, तो उस गुड कंडक्टर में जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विद समथिंग लाइक दिस। And what is interesting behavior that you can identify is कि अगर गुड कंडक्टर हो उसमें प्रोपगेशन कांस्टेंट इसके बराबर है, एंड वी नो कि ये इसका रियल पार्ट भी है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी है, और आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। Whatever is the value of or expression for alpha, the same is for beta because we have 1 plus j। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ so that's obvious कि what we have found is कि गुड कंडक्टर में आपके पास रिजल्ट क्या है, 1 प्लस j, और इस 2 अंडर रूट को भी मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। सो वी हैव ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 अंडर। सो गुड कंडक्टर के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमारी ये है जो कि किसी भी लॉसी मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपका मीडिया गुड कंडक्टर हो तो फिर हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, just telling us that alpha is equal to beta. So attenuation constant is the same as phase constant. Now this expression will help us to
talk about a related concept जिसको आप मे बी किसी और कोर्स में भी पढ़ चुके हों. इसको हम कहते हैं स्किन इफेक्ट. और इसी से फिर रेलेवेंट एक टर्म है जिसको जिसको आप कहते हैं स्किन डेप्थ. सो व्हाट इज स्किन इफेक्ट और व्हाट इज स्किन डेप्थ? एनी आइडिया जी? किसी को कहीं आपने पहले पढ़ा है जी स्किन डेप्थ या स्किन इफेक्ट? सर ये स्किन डेप्थ तो वो पढ़ा था ईएमएफ में सर, वो पेनिट्रेशन के सर पावर को कोई कहते हैं कि Okay, so it means that you have already talked about this in EMF. Let me go into the detail. Basically, the idea is कि हमने इस चीज़ को तो देख लिया है कि अगर हमारे पास लॉसी मीडियम होगा तो उसमें प्रोपेगेशन कांस्टेंट इसके बराबर होगा, अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा. और अल्फा का मतलब है कि आपका वेव एटेन्यूएट हो रही है. कितनी एटेन्यूएट हो रही है वो इस पे डिपेंड करता है. हमने अज्यूम किया कि अगर हमारा मीडियम गुड कंडक्टर होगा जो कि लॉसी मीडियम होगा तो उसमें अल्फा की वैल्यू जो है इसके बराबर होगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम यूज करें कि मैंने लिखा हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज दिस. सो गुड कंडक्टर में वेव की जो एटेन्यूएशन होगी वो इस फैक्टर के साथ होगी. ठीक है, अब ये आइडिया हम यूज करेंगे टू टॉक अबाउट दिस स्किन इफेक्ट. इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास एक वेव है जो कि लेट से लॉसलेस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, और इसके बाद ये इसके सामने हमने एक लॉसी मीडियम रख दिया, तो ये वेव जब इसके अंदर इंटर होगी तो इसका एम्पलीट्यूड इट इज गोइंग टू एटेन्यूएट. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस अल्फा इफेक्ट. अब इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल है ये इसके अंदर जो पेनिट्रेट करेगा वो एक खास हद तक जाएगा. उसका मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन कि इसका हमने इसकी थिकनेस कितनी है, हो सकता है कि इसके दूसरे एंड पे हमें कुछ भी ना मिले क्योंकि ये वेव टोटली एटेन्यूएट हो गई. ठीक है, अब ये कितना इसके अंदर पेनेट्रेट करेगी ये डिपेंड करेगा इसकी स्किन डेप्थ के ऊपर. ठीक है, आप अज्यूम करें कि ये इसकी स्किन है, तो हाउ मच दिस वेव कैन पेनेट्रेट, इसको हम कहेंगे स्किन डेप्थ, और इस फिनोमिना को फिर हम स्किन इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, कि आपका जो सिग्नल है इट इज ओनली गोइंग टू बी ऑन द सरफेस और ऑन द स्किन ऑफ द एनी सरफेस, और कितने स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा वो ऑफ कोर्स इस मीडियम की लॉसेस के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, लेकिन हम इस चीज को क्वांटिफाई करेंगे. ठीक है, हम मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जिसके बेस पे हमें पता चलेगा कि ये इसके अंदर कितनी सेंटीमीटर या मिलीमीटर के अंदर पेनिट्रेट करेगा. दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन.